हेलो एवरीवन आज आम यही डायग्राम पढ़ा दिस इज द डायग्राम ऑफ ए virus. As we know, the virus is the microbes beyond cellular organism. आमे भाइरस को सेलुलार ऑर्गेनिज्म मान भितर इनक्लूड करि परिबा नाही किंतु तार किछि कैरेक्टरिस्टिक्स पाई सेलुलार ऑर्गेनिज्म मान भितर इनक्लूड मध्य करा जायछि. So this is actually the border line between the living and non-living. Living एथिपाई जे से जेतेले कोनोसी होस्ट भितरे कोनोसी लिविंग ऑर्गेनिज्म रो सेल भितरे थाए से तार मल्टीप्लिकेशन करि पारे. तार न्यूक्लिक एसिड अछि सेटा डीएनए हे थाई पारे किबा आरएनए हे थाई पारे. तो ए दुईटा कैरेक्टरिस्टिक पाए ताको लिविंग ग्रुप रे इनक्लूड करा जाय छै. किंतु तार साइटोप्लाज्म नाही सेल एनावेलेबल सेल मेम्ब्रेन सेल वॉल भलिया स्ट्रक्चर ही नाही तबे तार न्यूक्लियस प्रॉपर्ली डेवलप नुह तो से नॉन लिविंग ग्रुप रे ऐड करा जायछि. आ गोटे जिनस नॉन लिविंग ग्रुप रे एथिपाई मध्ये ऐड करा जायछि तार कोनोसी मेटाबॉलिक एक्टिविटी नाही जेमति रेस्पिरेशन डाइजेशन बहुत गुडा सेलुलर एक्टिविटीज थाए जोटा कि से परफॉर्म करे नाही. एंड आ गोटे मोस्ट इंपोर्टेंट जिनिस होला जे से जेतेले होस्ट बाहरे थाए लिविंग ऑर्गेनिज्म रो सेल बाहरे थाए सेटा सेतेबेले inactive ହେଇକି ଥାଏ. So for that reason they are known as the border line between the living and non living. ଆଉ ଭାଇରସ ର अर्थ होछि एक्चुअली पॉइजन. तो पॉइजन ता हम बॉडी पाई किबा कोनसे भी लिविंग ऑर्गेनिज्म पाई क्षतिकारक. ओके सो virus is also known as the non-cellular submicroscopic parasite having nucleic acid in the form of DNA or RNA and is covered by a protein coat. तो हम यदि virus रो structure को जिबा ताहले it is having only the nucleic acid and surrounded by the protein coat. तो सबु virus रे न्यूक्लिक एसिड सेटा डीएनए हेथै पारे किबा आरएनए हेथै पारे ताकू सराउंड करके किछि प्रोटीन कोड थाए सेटा ही भाइरस रो स्ट्रक्चर आउ कोनोसी जिनिस भाइरस रे न थाए. तो भाइरस को जोड़ा सिंगल भाइरस ताको कहा जाए विरियन. ओके एंड द प्रोटीन कोड दैट इज प्रेजेंट इन भाइरस इज नोन एज योर कैप्सिड. तो प्रोटीन कोड जो सराउंड करके थाए न्यूक्लिक एसिड को से प्रोटीन कोड को कहा जाए कैप्सिड. आउ से कैप्सिड बहुत गुड़ा छोट छोट सब यूनिट रे तैयारी प्रोटीन सब यूनिट रे तैयारी आउ सेटा को कहा जाए कैप्सोमियर. सो एवरेज साइज ऑफ द भाइरस इज एक्चुअली 1 माइक्रोन. एंड देयर आर 3 टाइप्स ऑफ भाइरस एक्चुअली. जदि भाइरस कौन सी प्लांट को इन्फेक्ट करुछि ताहले ताको कहा जाए प्लांट भाइरस और यस प्लांट भाइरस इट इज. एंड व्हेन इट इज इन्फेक्टिंग ए एनिमल देन इट इज नोन एज योर एनिमल भाइरस. आ जदि बैक्टीरिया को अटैक करुछि ताहले ताको कहा जाए बैक्टीरियल भाइरस बा बैक्टीरियोफेज. ताको खाली PHAGE फेज मध्य कहा जाए. ओके एंड एग्जांपल है आपनकर प्लांट भाइरस मान भितर टोबाको मोजाइक भाइरस. दिस इज एक्चुअली द स्ट्रक्चर ऑफ द टोबाको मोजाइक भाइरस. And when it is infecting an animal, as we know, it is the animal virus. And example are smallpox, chickenpox, measles virus, and mumps virus, and common cold virus, that is your influenza virus. So plant virus मान भितर सब स्मॉलेस्ट प्लांट भाइरस होची टोबाको नेक्रोसिस भाइरस. आउ एनिमल मान भितर जो भाइरस टा अछि दैट स्मॉलेस्ट भाइरस होची फुट एंड माउथ डिजीज भाइरस. So this is actually the structure of a plant virus and it is the structure of tobacco mosaic virus. माने ए virus टा definitely उठे tobacco plant को infect करके tobacco mosaic disease करथुबो. आउ एथिरे देखो तो एटा होची RNA virus टा. RNA virus, this is the RNA. Okay, this is the helical single stranded RNA and surrounded by the protein coat. Okay, this total is known as your capsid. And this individual structures that are known as your capsomer. So gote tobacco mosaic virus re 2100 of capsomers are present. These are the capsomer. Okay, and similarly if we go to the animal virus, then this is the structure of the animal virus.
Most of the animal virus are actually rod shaped structure, and animal virus are spherical in shape. This is the structure of an animal virus, and this is actually the virus that causes the AIDS. Human being को जो AIDS रोग କରିଥାଏ HIV भाइरसटा एटा होची तार स्ट्रक्चर आ यार मिडिल रे अछि RNA. Actually this is a RNA virus. So this is the RNA, the nucleic acid, and that is covered by the capsid layer, and these are one on capsomere, means a number of capsomere that form the capsid, and external to the capsid it is having a viral envelope. In some virus, especially in animal virus actually, some viral envelope are present external to this capsid layer, which is made up of some protein and carbohydrate, and just external to it some glycoprotein is also present here. And next virus is bacterial virus or bacteriophage, which is a tadpole shaped structure having three important parts: head, neck and tail region. Head is the most important part, which is having the DNA, जोटा कि न्यूक्लिक एसिड आमे कहूचु, न्यूक्लिक एसिड DNA, and that is surrounded by the protein coat, and the head is connected to the tail region with a small connection, that is neck, and here two plates like structure are present, this one and this one. This is actually known as collar, and this is known as your basal plate or base plate. This tail region is actually a hollow pipe, which external to it is having a contractile sheath, and this hollow pipe is connected to the base plate, and here the base plate gives rise to 6 tail fiber, and this one is the core, which actually bursts into the bacteria. The virus that attacks the bacteria or the bacteriophage, we can say, that actually attaches itself to the wall of the bacteria with the help of this base plate and tail fiber, and this contractile sheath is having the hollow pipe, and that contain actually some lysozyme type of enzyme which actually dissolves the external wall of the bacteria and help the attachment of the virus with the bacteria. So this is all about the 3 types of virus, and next class we'll read about or we'll know about the reproduction of virus. Actually reproduction we can't say because virus is the borderline between the living and non-living, तो सेथिपाई हमें virus रा reproduction कहबानी, that is actually multiplication of virus. So next blog रे मु आपण मानक पय रेडी करबी गोटे blog about the multiplication of virus. So till then, bye, thank you.